Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav and welcome to another episode of Daily News Analysis that I do from Monday to Friday. And as we know that newspaper is very important for every aspirant, or I hope I welcome each and everyone here and I hope you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. Please let me know once if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? So, in short, why newspaper is important? Because it gives you an information कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड यू मस्ट बी an aware citizen कि लाइक हमारे कंट्री में क्या क्या चीज़ें चल रही है. तो आपको पता है न्यूज़पेपर में हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं. वी मेजरली डिस्कस अबाउट द इंडियन एक्सप्रेस एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़, स्पोर्ट्स बेस्ड न्यूज़, साइंस एंड टेक, पर्सनल न्यूज़, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड मिसलेनियस. And here is the quote of the day that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today, make a new ending. So शुरुआत करते हैं. Questions of the day ये हमारे लास्ट में होंगे and we'll discuss about quick tips. Here we are with the first article is breaking new ground in key areas. Recently, as we know that यहाँ पर 2+2 dialogues हो रहे हैं, ठीक है? And that 2+2 dialogue मतलब that India and Australia have reaffirmed to work together across different sectors to strengthen their bilateral ties. So in the आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर्स हैं एंड डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है. So Australian foreign ministers and Wong defense minister Richard Marles with their Indian counterparts Rajnath Singh and Jaishankar. What are the reason 2+2 dialogue? The very first thing that you should know about is 2+2 dialogue is for India and Australia. That is for India and Australia. So India and Australia reaffirm support to Israel against terrorism. That call to release for hostages. And they also committed to meet urgent needs of civilians in Gaza. So what are the purpose that two ties? Because they acknowledge that through joint exercise they have made substantial progress in building comprehensive defense partnership. And यहाँ पे आपको एक चीज़ और जाननी होगी इंडियन नेवी के सबमरीन INS वगीर के बारे में. INS वगीर. So INS वगीर that welcome hosting of exercise Malabar by Australia and the maiden visit by the Indian Navy, that is submarine INS वगीर to Australia this year, that committed to foster collaboration in the realm of critical minerals. Second thing that you should know that call for the rule-based Indo-Pacific. अभी क्या? Because India and Australia के पास that stress on importance of exercising right and freedom in oceans as per the international law while addressing challenges like those in East and South China Seas में. और इससे हमारा क्वाड भी स्ट्रेंथन होगा. क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स है. इसमें we have 4 countries. इसमें अपना प्यारा देश भारत, इंडिया है एंड देन जापान है, उसके बाद US है. सो they agreed to empower Quad and India said it looked forward to welcoming Australian PM Anthony Albanese. इनका नाम भी याद रखो. ऑस्ट्रेलियन PM का नाम क्या है? Because this name is Anthony Albanese at Quad Summit in Delhi next year. And cooperation on maritime that noted progress in maritime information sharing and that domain awareness, that said they looked forward to growing engagement mechanism to real-time info sharing. The next, the impact that would be in support technology. So it highlighted technology and industrial cooperation that are essential pillars of relationship between the two nations. And second, आपको जो second last point है जिसमें आपको दोनों कंट्री में 2+2 डायलॉग से क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं दैट प्रोग्रेस अंडर इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग्स और दैट एक्नॉलेज ऑल्सो इन इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के टाइम में भी. और ग्लोबल गवर्नेंस होगा. ग्लोबल गवर्नेंस कैसे इम्पैक्ट होगा इससे? बिकॉज दैट
after 2+2 dialogue that commitment to comprehensive UN reform agenda, that including expansion of UNSC, which is United Nations Security Councils, that membership, and ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, दैट रीइटरेटेड सपोर्ट फॉर इंडिया परमानेंट यूएनएससी मेंबरशिप। सबसे पहले आपको एक और चीज़ समझनी होगी 2+2 डायलॉग के बारे में। सो 2+2 मीटिंग है पार्टिसिपेशन ऑफ 2 हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर है। इसको आप कैसे लर्न रखोगे, आप FD करके लर्न कर सकते हो। 2+2 FD, ये फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है माय फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड फॉरेन एंड डिफेंस पोर्टफोलियो। इसमें आप देख सकते हो हमारे फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, इनके भी फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये भी अपने इंडिया के। तो आप इस इमेज से आप ये याद रखो 2+2 डायलॉग जो है आपका, 2+2 डायलॉग इज फॉर द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और सेम ऑस्ट्रेलिया के भी यहाँ पे हैं। सो इनका मेन पर्पस क्या है, to partners to better understand and appreciate each other's strategic concern, and उसका main pattern क्या है। So US is India oldest and most important 2+2 talk partner. Additionally जो 2+2 meetings थी that with minister with Australia, इसमें जापान, US and Russia. So अगर हाईलाइटर्स की बात करें, मेन आपका इसमें डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जैसे मैंने आपको इसमें भी बताई थी इस आर्टिकल में। यहाँ भी आपको डिफेंस सेक्टर जो अपने INS वगीर की बात की थी मैंने आपसे, तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा दोनों कंट्री के बीच। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखो तो इसमें OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। सो हाउ मच ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट कंट्रीज इज ऑक्यूपाइड फॉर दिस। तो आपको सबसे पहले देखनी होगी OECD क्या है एंड क्या कंसर्न है इसके पीछे। सो ये जो है OECD के बारे में देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको OECD के बारे में है। So it is an international organization of 38 countries committed to democracy and market economy. And OECD members are typically democratic countries that support free market economies. Or OECD was established on December 14, 1960 को establish किया गया था, and by the 18 European nation। इसके headquarters कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। तो OECD क्या पब्लिश करता है, बेसिकली OECD पब्लिश्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, उसको एनालाइज करना, फोरकास्ट करना ऑन द आउटलुक फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड वाइड, एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सीक टू एलिमिनेट ब्राइबरी एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम वर्ल्ड वाइड। सो एंड OECD maintain also blacklist of the nation, they are considered like uncooperative tax havens, or India is one of the many non-member economies with which OECD has working relationship in addition to its member countries. Next है आपका यहाँ पे, which country recognize Hamas as a terrorist organization? So Israel ने designated किया है लश्कर-ए-तैयबा as a terror organization November 21 को। ये ध्यान रखना आप, ये इसराइल ने कंसिडर करा है इसे लश्कर-ए-तैयबा को एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, कब, नवंबर 21 को। सो इसराइल कंसिडर्स डेडली एंड रिप्रेहेंसिव टेरर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंडियन सिविलियंस एज वेल एज अदर्स। सो अब बात करते हैं 26/11 की। सो द मूव कम्स अ फ्यू डेज अहेड ऑफ 15th एनिवर्सरी ऑफ 26/11 टेरर अटैक्स इन मुंबई। So the designation of at a juncture that being seen as a nudge of India to be the same with Hamas. India did initially describe the Hamas raids in the southern Israel as a terrorist attack, but has since spoken of the need of two-state solution to the Israel-Palestine conflict. किस country ने Hamas को designated किया है as a terrorist organization? Apart from Israel, 6 countries हैं इसमें, बना आपका यूरोपियन यूनियन and Australia, Canada, UK, Japan, Paraguay and US. So mainly ये जो जितने भी कंट्री आपके सामने हैं, that is यूरोपियन यूनियन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका कनाडा एंड UK, उसके बाद जापान, उसके बाद आपका US. So EU first listed Hamas as a terrorist organization 2001. तो यूरोपियन यूनियन जो है इसने सबसे पहले हमास को
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करा इन द ईयर ऑफ 2001. So the wake of 9/11 attacks in the US, so the decision was annulled in 2014. उसके बाद द गार्जियन की एक रिपोर्ट आई थी. द गार्जियन की रिपोर्ट में दिस वाज, उसमें ये चीज़ मेंशन थी की हुई. सो द डेजिग्नेशन वाज देन रीइंस्टेटेड एंड EU कोर्ट ने रिजेक्ट किया था हमास अपील टू द डी लिस्ट इन 2019. बाद में ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में इसको रिकॉग्नाइज किया एज अ मिलिटेंट ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप. Canada government also described Hamas as a radical Islamist nationalist terrorist organization. It was first listed in the year of 2002 में. बाद में फिर UK 2021 में इन्होंने एक स्टेटमेंट गई थी एंड 2022 में ये कंसिडर किया. इनिशियली जो UK गवर्नमेंट है that proscribed Hamas military wing in 2000, but this was extended to all of Hamas in 2021. And Japan, following the Hamas attack of October 7, Japan foreign ministers that ने बताया well, Japan does not have legal system for legally designated terrorist organization. So what does designation as a terrorist organization entail? As the government designate a terrorist organization under specific national law such as Terrorist Act 2000, the UK, the Unlawful Activity Prevention Act 1967, that is in UAPA कहते हैं. So designation is based on a specific criteria and can attract a range of curbs, including the freezing of assets and takeover of the properties of designated organization. Currently हमारे पास जो है as per the UAPA report, Unlawful Activity Prevention Act, 44 organizations are designated as a terrorist organization under the first schedule of UAPA. So I hope this one is very clear for each and everyone. Let's move to the next one. यहाँ पे क्या है? What is the matter? A short treatise on Indian materialism. So materialism जो है that neither new or mystical. It has been around a system of thought that since the earliest records of human history. Simply put, it maintains the origin of everything that really exists is matters. So in short अगर देखें इसमें तो what is materialism is? So materialism simply put maintain that the origin of everything that really exists is matter, and there does not exist anything but matter. So it's all that appearance including intelligence are transformation of matter, and these transformation are governed necessarily by laws and inherent in nature, which is fundamentally material. तो बेसिकली इसमें आपका एक थोड़ा फिलोसफिकल डेटा है इसमें, विच इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव, बट मैंने आपको इन जनरल ये चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी. यहाँ पे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में. एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आपको जैसे आपको चैट जीपीटी के बारे में जानना होगा, दैट व्हाट इज जीपीटी इज़. तो रिसेंटली आपने देखा होगा चैट जीपीटी में, तो इसके जो सीईओ थे सैम ऑल्टमैन, ये फिर से रिटर्न आ गए. ChatGPT, this is an open AI CEO. So ChatGPT is an, we can say, as an open AI chatbot है. GPT का मतलब क्या है? It's a generative pre-trained transformer. So emerging technologies, as we can see, euphemism for the capabilities that rely on a combination of cyber technology, artificial intelligence, unmanned system and advanced computing. So is in vague among most militaries. The Indian military is seemingly alive to this development. So at the Chanakya Defense Dialogue, the Chief of the Army Staff, General Manoj Pandey ji, इन्होंने मनोज पांडे हमारे Chief of Army Staff है, Chief of Army Staff, the name is Manoj Pandey. So in short, यहाँ पे not to be left out, the Defense Ministry through AIDEF that showcase its initiative in this realm, which includes the Defense AI Council. और इसमें जितनी भी emerging technologies हैं उसको हम कैसे कैसे use करना है in terms of potential of emerging technology in military that requires like we can say altering existing organization and approaches.
सो यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझनी है, दैट fully realizing the potential of emerging technology that requires altering existing organization and approaches. The first jointness defined as interoperability between the three services remains problematic. The Chief of Defence Staff has explicit mandate to create joint theatre commands. So effectively you need to say कि ये सारी चीज़ें military को strengthen करने के लिए अच्छा है. And here we are the Edinburgh to Kozhikode, how Kerala got onto UNESCO City of Literature list. So 7th edition of Kerala Literature Festival that should attract hundreds of thousands of book lovers, as in previous years it will be the first since UNESCO named Kozhikode as City of Literature. So Kozhikode is India's City of Literature. It was in 2004 that UNESCO launched the Creative Cities Network, और ये Creative Cities नेटवर्क जो है आपका इसके अकॉर्डिंग CCN के अकॉर्डिंग CCN. So Kozhikode is India's first city of literature, as it was in 2004 that UNESCO launched the Creative Cities Network to promote cooperation among cities that have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban development. And सबसे पहले आपका एडिनबर्ग जो है ये आपका was the first city of literature. कमेंट सेक्शन में कोई बताओ ये कब हुआ था, इन विच ईयर. सो अभी आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी, जो ग्वालियर है अपना मध्य प्रदेश, ग्वालियर हैज़ बीन नेम्ड एज सिटी ऑफ म्यूज़िक. सो जो ग्वालियर है इज सिटी ऑफ म्यूज़िक. एंड ऑनर इट वॉज अचीव्ड बिफोर बाय टू अदर्स इंडियन सिटी. वाराणसी को मिला था, वाराणसी को 2015 में, एंड वाराणसी के बाद चेन्नई 2017 में. एंड द सिटी हैज़ टू सबमिट अ बिड एक्सप्लेनिंग व्हाई इट डिजर्व टू बी कंसीडर्ड, राइट. चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है. या अब हम बात करते हैं क्विक टिप्स की. तो 7 कंट्रीज़ को लर्न करने के लिए MBBS स्पेन बेसिकली एक नेमोनिक्स होती है. विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स यू कैन ईजिली लर्न एनी टॉपिक्स. उसमें आपका मालदीव्स है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल. तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, इसको MBBS स्पेन कहते हैं. एंड ये साहब है स्टेट इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, असम एंड बंगाल. तो विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स ये आप सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो. एंड नाउ वेयर इज द क्वेश्चंस ऑफ द डे. एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रिवर बेसिन जो है दैट इज एक्सटेंडेड अप टू, हियर आर 4 ऑप्शंस: लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा. लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब. देखो तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. Indus basin that is spread over Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal, Punjab and part of Rajasthan, Haryana and Chandigarh. Annapurna certificate program is an initiative of the Niti Aayog, FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, Food Corporation of India and Indian Council for Cultural Relation. So D is the right answer. Annapurna Certificate Program is an initiative by the Indian Council for Cultural Relation (ICCR) that has recognized 6 Indian restaurants worldwide for promoting Indian culinary traditions. This annual program acknowledges restaurants contributing to India's cultural cause through cuisine on global scale.
एंड ये है आपका थर्ड वन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. So, Bureau of Indian Standards is the India national standard body. It's a part of Department of Consumer Affairs, which is in the Ministry of Consumer Affairs. And ये एक एक्ट पास किया गया था, Indian Standards Act 2016, which came into effect on October 12, 2017. And जो BIS है, responsible for standardization, marking, quality certification of goods, hallmarking, laboratory services and training services. Which substance is commonly used in cloud seeding? Cloud seeding, my friend, ये आपका artificial rain का एक दूसरा नाम है cloud seeding. So cloud seeding to promote the formation of ice crystal in clouds. उसके लिए हम यूज़ करते हैं silver iodide. B is the right answer. Silver iodide is common substance that is used in cloud seeding, artificial rain. When released into a cloud, तो silver iodide के जो particles होते हैं that provide a surface for ice crystal to form around. So this process intended to modify the cloud microphysical property and potentially enhance precipitation. And here we reach the last question. Production gap report is published by, और इनमें से कोई भी नहीं रिपोर्ट करता है, डी ये हमारा राइट आंसर है. सो ये SEI करता है, स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट. So I hope this one is very clear for each and everyone, and you enjoyed the session a lot. And today we meet at 3 p.m. for a deep dive session, and I hope that you will enjoy the session a lot. If you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned, we'll meet you at 3 p.m. today for the deep dive session. Thank you so much for joining with us. Bye bye and take care. We'll meet you at 3 p.m. We'll discuss about very burning issue of today that is going on. Thank you so much. Bye bye and take care once again.